हेलो ऑल, वेलकम टू पिवटल ट्रेडर्स। सो बहुत लोग बोल रहे थे कि एक वीडियो और डालें ट्रेड के बारे में, है कैसे ट्रेड लेते हैं। सो आज मैं हिंदी में बात करूंगा बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं हिंदी में, तो उनको भी मायूस नहीं करना है। तो आज का जो प्लान है, इट्स फ्राइडे एंड अराउंड 11 ओ क्लॉक हो गया है। तो मैंने एक सुबह एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, दैट वाज आयरन कॉन्डोर, which I also shared on my Telegram channel. I can just share you here. So that was somewhere here. Let me just open it up. Yep. Oh, sorry. So you can see I took this trade in the morning. तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, 39,200 का आप कॉल देख रहे हैं और 39,200 का पुट देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ मैंने सेल करी हुई थी। तो उसके आसपास मैंने ये आयरन फ्लाई के जैसा कुछ बनाया था। बट अगर इफ़ यू सी करंटली कि बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट आ गया है बैंक निफ्टी में, एंड जहाँ से इसने गैप अप लिया था वहाँ से एक पुल दिया था अपसाइड में, तो उसको सस्टेन नहीं करा इसने समहाउ। तो वहाँ से एक डाउनफॉल ज़रूर आया है यहाँ पे। तो ओनली इशू इज़ कि वहाँ से आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि इट विल स्पेंड लिटिल बिट मोर ऑफ टाइम। तो वहाँ पे उसने टाइम नहीं स्पेंड किया, तो इसलिए मेरे को अब स्केल डाउन करना पड़ा। तो अगर इफ़ यू सी करंटली, लेट मी शो यू हियर। तो दिस वाज द पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ अ ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड। सो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इट वाज अ गैप अप एंड इट कंटिन्यूड ऑन द अपसाइड। सो देयर वाज अ डिमांड जनरेशन अराउंड दिस लेवल्स। तो अगेन सिमिलर थिंग शुड हैपन हियर। तो आप देख रहे हैं सिमिलर चीज़ें वैसी ही हो रही है यहाँ पे भी, कि डिमांड जनरेशन यहाँ पे दोबारा से रिज्यूम हो रहा है। तो इवन दो आई हैव डन इज, पहले मैं 39,200 के आसपास अपना मेरा आयरन फ्लाई था, जो कि मैंने 39,200 से अब 39,000 पे कर दिया है यहाँ के आसपास। तो इफ़ आई कैन शो यू माई प्रॉफिट स्क्रीन हियर। सो दिस इज द रनिंग प्रॉफिट अराउंड 8,000 7,000 रुपीज़ इज गोइंग ऑन। एंड इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी हमने इसको एक बार स्केल डाउन कर लिया है। तो जैसे जैसे अब दोबारा से अगर मार्केट में एक्टिविटी, अगर डेटा भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, तो मैं इसको दोबारा से रिज्यूम करूँगा। तो बिकॉज डेटा इज़ गेटिंग नेगेटिव हियर, सो आई keep you guys updated and let you know. So guys, you can see that the data, whenever it is coming for a bearish trend, it is coming with a good amount of volume on the bear side, and you can see that whenever it is trying to have some lift, it is quite weaker. So you can see that यहाँ पे जब भी वो बुलिश डेटा बना रहा है, डेट इज कॉल साइड, जब भी थोड़ा वीक हो रहा है, पुट साइड हैवी हो रहा है, तो 1,16,000 का ही एडिशन आ रहा है यहाँ पे। और जब भी बेरिश हो रहा है, दैट इज़ द कॉल साइड आर हेवियर, कॉल राइटिंग इज़ हेवियर, तो वो ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। एंड सिमिलर थिंग इज़ देयर ऑल्सो इन द प्राइस, कि प्राइस में भी जो हो रहा है, प्राइस अब क्या कर रहा है कि उसने मॉर्निंग में एक अप ट्रेंड लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया। अब वो उससे ज़्यादा टाइम ये डाउन साइड, डाउन लेवल पे, लोअर लेवल पे ये स्पेंड कर रहा है। अब जितना ज़्यादा ये टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा, उससे उतना ज़्यादा उसका इंटेंशन क्लियर होता चल जाएगा कि मार्केट इज़ नॉट देयर फॉर अ बुलिश नेचर हियर। और साथ साथ मेरा जो पोजीशन है, आई ऑल्सो अपडेट यू अबाउट इट। एंड द पोजीशन, you can see that the position is somewhat closer to what we anticipated. uh, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अराउंड 20 मिनट्स 25 मिनट्स ही हुए हैं। तो देर इज़ नॉट मच ऑफ अ चेंज हियर। सो और इसको मैं एडजस्ट करता रहता हूँ कि जैसे ही मेरे को एक बहुत ज़्यादा मोमेंटम आता है, तो एक साइड को मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ, फिर दूसरे साइड को फिर चलने देता हूँ, और फिर दोबारा जैसे ही सेटल हो जाते हैं मोमेंटम, देन आई रिज्यूम इट। तो उसमें मुझे कई बार अच्छा डेल्टा डीके मिल जाता है। तो वो भी मैं ट्राई करता हूँ कि अपने पोजीशन को जितना ज़्यादा उसमें वॉलेटिलिटी नहीं आए पोजीशन में, आई ट्राई टू कीप इट, कि इसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। लाइक ये एकदम से 4,000 पे नहीं आना चाहिए, एकदम से ये लाइक 10,000 12-15,000 पे आए, तो उसका क्या रीज़न है, तो उसको मैं जल्दी से जल्दी लॉक इन कर सकूँ। तो वो भी मेरे प्लानिंग में चलता रहता है कि इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्टेबलाइज करके चलूँ। राइट, अभी और अपडेट आते हैं तो मैं बताता हूँ। सो यू कैन नोट डाउन द टाइम एट विच आई एम अपडेटिंग दीज वीडियोज़, तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा कि कैसे एक साइकोलॉजी वर्क होती है।
And let me also show you something very interesting here. So those people who haven't opened FYERS account, they can use the link in the description. तो FYERS का अकाउंट आप खोलो, बिकॉज यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है ऑप्शन सेलिंग। और मैं आपको दिखाता हूँ जो पोजीशंस हमने अभी बनाई हुई हैं उसको एनालाइज करना इज़ वेरी इजी। सो नीचे मेरे पोजीशंस हैं और ये ऊपर पे अप चार्ट बना देता है, ये एकदम इजीली बता देता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे मेरा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आएगा। तो इट्स सो इजी टू विजुअलाइज कि कैसे अपनी स्ट्रैटेजी को इंटैक्ट करना है, कितना टाइम लगाना है। यहाँ पे कुछ लॉस दिखा रहा है, मे बी डैट इज़ बिकॉज ऑफ ये स्ट्रैटेजी की वजह से नीचे एक स्ट्रैटेजी है। बट इफ़ यू सी माई रियल पोजिशन, इट इज़ शोइंग अराउंड 9000 प्रॉफिट। तो ये एक्चुअल में जो आप पोजीशन जो सेलेक्ट करेंगे उसका ये प्लॉट कर देगा और आपको बताएगा कि कितना उसमें फ्लक्चुएशन आ सकता है। अभी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है, तभी आप देखें ये नेगेटिव जो रेड एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। ऑल बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, यू कैन सी देयर इज अ स्पाइक इन विक्स। okay, in fact there is a downfall in the wix, but maybe because of the adjustments it is showing me that there is a negative return. But as far as I can see on my position here, it is quite stable at around 8000. So देखते हैं अभी क्या होता है। I'll update you in an hour. Let's see. So guys, you can see that there is a breakdown again. The trend continuation on the downside वो continue हो रहा है बार बार। तो अभी मैंने क्या किया है, जो हमारा जो आयरन फ्लाई चल रहा था उसको मैंने थोड़ा कन्वर्ट करके ट्वीक किया है सो दैट इट फिट्स टू आवर करंट ट्रेंड विच इज़ बेरिश। तो अभी जो मेरा रनिंग ट्रेड है, यू कैन सी हियर, it would be 38,800 on the put side and 39,000 of the call side. So I have kept it very close to the at the money, and I have converted it into a kind of a strangle, you can say, around this. So the hedge is just for the margin benefit. So I'm taking this. Further, you can see that if I am to make a sense of the neutral zone here, I have to draw a break even here. So let me just try it out here. तो ब्रेक इवन जो हमारा जो अभी आएगा, दैट इज समथिंग अराउंड 38,135. लेट मी ड्रॉ हियर 38,135. It should be, let's take this. So whenever I do any option selling, I draw my neutral box in the chart so that I know exactly what is happening. So 38,135 is the neutral zone on the lower side. So this is quite comfortable, and on the upper side we have 39,664. So somewhere around this. So this is the neutral zone now for the thing, and you can see that surprisingly it is also near to the black line on the upper bound and the lower bound. So this would be the most comforting range for me. So what is the plan now? The plan is that this is, since this is the middle where I will get the maximum amount of decay, so I will try to keep my my positions as much as intact around these vicinities, and any kind of violent change in the data or movement in the price would be looked upon, and I will try to adjust. So currently if I see, my position is more or less 10,000 rupees. I have scaled down. Even though I have scaled down, there was some a bit of delta benefit. I took a pause to enter into the PE, so I have some amount of delta benefit here. So definitely this would be very interesting because we have black line on both the sides, and our strategy is well defined and well structured. तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए इसके लिए. Let's see how it goes. So guys, the update is that again I have to readjust the levels of strikes, and I shifted from 39,200 to 39,000, and again I have to do a bit of tweaking, and I have shifted it much lower now to 38,800 because the bearishness and the data negativity continues. So what I have done is that I have now again made it into a straddle, and the hedge benefits are being carried. So this goes a little bit lower now, and if I am to tell you about the break even levels,
Let me just get update from the payoff chart here. So the payoff chart says that now the break even is somewhere around 38,000 level, because I've shifted the straddle, or you can say the iron fly. It is going now 38,000 on the lower front, and 39,590 is the upper front. Okay, so somewhere around here is the break even, which is seems to be exactly around the black line. So let's delete this. Now the neutral zone looks quite wider because I've shifted the straddle. Now if I am to just this also includes the position of profit, so the profitability has increased a slight. So you can see how the management of the trade is rewarding me. It's not that I am incurring losses here. तो जैसे जैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, स्ट्राइक्स को चेंज कर रहा हूँ, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी वो मेंटेन हो रहा है और धीरे धीरे वो इंक्रीज हो रहा है. देर इज़ नो एक वो नहीं है कि बस एक साइड का मेरे को डीके चाहिए डेल्टा का, बट मेरे को दोनों साइड मेरे को नॉन लीनियर चलना है मार्केट में, बिकॉज मार्केट कैन एनी वे बिकम साइडवेज. ट्रेंडिंग होगा, कितना ट्रेंडिंग होगा, एक झटके में अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा, बट अल्टीमेटली टेक अ पॉज. सो वही एक लॉजिक है जो यहाँ पे मैं उसको मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ. और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरा जो करंट स्ट्रैटेजी जो रन हो रहा है इस तरह मैं दिखाता हूँ यहाँ पे. तो फायर्स का अकाउंट जिसने नहीं खोला है, दे कैन अवेल दिस सर्विसेज ऑफ ऑप्शन डेस्क. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो यू कैन यूज दैट लिंक, इट विल बेनिफिट द चैनल. सो यहाँ पे अगर हम आते हैं, sorry, the payoff chart, and if we see here what all positions are being looked upon here. So the ones which are closed, like जो red में है वो close हो चुके हैं, तो close वाले को हम delete कर देते हैं एक बार. I mean यहाँ से untick कर देते हैं. तो so these are the positions now जो अभी रनिंग हो रही है. अभी यहाँ पे जो ब्रेक इवन जो आ रहा है, दैट इज समवेयर अराउंड 38,147. तो इसको ड्रॉ करते हैं हम. 147 एंड 452. 147 and 452. So this is exactly the break even of the current strategy of the fly. तो इसकी जो मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी एक बार देख लेते हैं. तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज समवेयर अराउंड 2.4 lakhs, एंड दिस इज यूजिंग कैपिटल ऑफ अराउंड 11 lakhs और सो. तो आप देखें प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखें, दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ. द रिस्क रिवॉर्ड इज ऑल्सो गुड इनफ. तो इसमें ये स्ट्रैटेजी को हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, बट विक्स को मैं बार बार एग्जामिन कर रहा हूँ. विक्स में मेरे को कोई ज़्यादा नहीं चाहिए. विक्स अगर गिरता रह रहा है तो स्टेबल है, तो इट्स ओके फॉर मी टू कैरी फॉरवर्ड दिस टिल मंडे. बट आई एम नॉट श्योर, लाइक एक कन्विक्शन आना चाहिए कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो ओनली देन आई विल डू. अदरवाइज इसको डेली पे क्लोज कर देंगे. सो यस, सो दिस इज़ इट गाइस. अभी का अपडेट यही है कि इसको अभी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम. तो देखते हैं अब 2 बजे के बाद क्या मूवमेंट आती है. कोई एक साइड डेवलपमेंट, कोई शॉर्ट कवरिंग आ जाए तो उस तरीके से फिर हमें दोबारा से मैनेज करना है. अभी के लिए इट्स क्वाइट कंफर्टेबल. द प्रॉफिट्स इज अराउंड 15,000 16,000 सो. तो इट्स क्वाइट स्टेबलाइज्ड. तो हम यही चाहते हैं कि प्रॉफिट्स को जो है स्टेबिलिटी वो बना रहे. अगर ये दोबारा से थोड़ा भी मूवमेंट मेरे को मिलेगा तो इसको दोबारा से मैं स्ट्रैंगल बना दूंगा. तो देखते हैं क्या होता है. So guys, it has been a quite a roller coaster ride, and you can see that all kind of things happened. And if I am to show you my screen here of the positions, तो पोजीशन में अब थोड़ा मैं ट्रेल कर रहा हूँ, जो बिकॉज पुट साइड अब नहीं बेच रहा हूँ. पुट साइड में काफ़ी मार हो गया. सो as you can see on the screen, this is the exact retracement which happened on the upside. Now
मोर लेस आई एम ट्राइंग टू सिक्योर 2% ऑफ माई कैपिटल। सो इससे ज़्यादा मेरे को नहीं अभी देना है मार्केट को, बट बहुत ज़्यादा, बहुत फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया ऑन बोथ द साइड्स। तो जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली भी इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग टुडे, बिकॉज फ्राइडे ऐसे ही होता है, फ्राइडे में अ, ऐसी चीज़ें ही होती हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल टू फ्राइडे। इसलिए या माय स्टॉप लॉस इज़ नाउ हिट ऑन दी कॉल साइड ऑल्सो। तो अभी एग्जिट करेंगे। सो आई हैव एग्जिटेड ऑल माय पोजीशंस नाउ। तो अभी कोई भी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.8% ऑफ द कैपिटल। तो लॉजिक वाज दैट वी वर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो एक बार समरी देता हूँ। एक बार हमने सुबह जो स्टार्ट किया 39,200 का हमने स्ट्रैडल बेचा था, फिर 39,000 बेचा, फिर उसके बाद स्ट्रैंगल में कन्वर्ट किया, फिर 38,800 बेचा हमने स्ट्रैडल। उसके बाद अगेन ये अपसाइड मूव एकदम से स्पाइक आ गया। तो इससे ये जो लोअर लो फॉर्मेशन जैसे बना रहा था ना, जैसे यहाँ से लिया, लेट मी शो यू। So this was forming lower low formations like this. It formed low. It was forming lower low formations. तो ये लोअर लो बनाना यहाँ पे इसने बंद कर दिया। जैसे ही इसने बंद किया तो ऊपर की तरफ मेरा स्ट्रैटेजी मेरा चेंज हो गया। अब दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, जो प्रीवियसली सपोर्ट था उसको ब्रेक करा। अब दोबारा से वहाँ पे एक रिएक्शन दे रहा है। अब ये यहाँ से एक रिएक्शन अगर यहाँ से ये वाले पॉइंट को, ये रेड वाले लाइन को नीचे ब्रेक करता है, तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेंट डाउनसाइड मूव हो सकता है। तो अभी मार्केट एकदम इनडिसिसिव हो गया है, ऑल काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी इसमें आ सकती है। तो इसलिए आई हैव एग्जिटेड। सो दिस इज माय प्रॉफिट। सो so you can check now. So even though there was a lot of volatility today, we were able to come out very nicely. I'm quite happy with it because there is no loss as long as there is no redness in the position. I'm quite happy because it's all about managing the risk more than earning any profit. So I hope you like the video, and मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। अगर कोई और ट्रेड लेता हूँ तो 330 पे इसको अपडेट करता हूँ कि और कोई ट्रेड लिया है कि नहीं लिया है। So a quick update is that I took some trades which was selling naked options, and it worked out quite well, but there was many stop losses getting hit. As you can see here, you can see here, I sold here somewhere around 415 rupees, and I covered at around 364 exactly at the point of the bottom. So I did say this scalp in option selling on the call side. I also tried to work it out on the put side, but it was not working. Obviously, I kept my stop loss very small because of the scalp nature of the trade. And yeah, we are back to around 2% of the profit. So this would be the takeaway profit. So let's discuss about how the price action really worked out. So you can see that, as I said, that the market is now breaking the pattern of forming lower lows. So what I'm saying is that when the market was forming lower highs and lower lows, and once it stopped to make any lower highs, in fact it went out to make a higher high from the point. So then it comes a inconsistency in the market that it should be sideways from there. So that's exactly what was happening. Once it stopped making any lower highs, it went sideways and making all kind of volatility. So now if you see the VIX here, VIX is somewhere around 2% down. So this attempts or kind of give me an enthusiasm to carry forward the trades, but I will not be doing that because next week there is RBI announcements and all. So I should not be looking any further to increase in the VIX, and thus it can pump the premiums, and I will be at a difficult phase in managing the positions. So I don't want anything to which can stress me out. This has been a quite a good week, and yeah, that's it guys, that's it for the day. So if you like the video and you want more of it, you want more of it to explain the video, explain the trades which I take live, so please do comment and subscribe, and let me know how do you feel about it, and what else do you want me to cover in the video. Okay, so also let me very quickly just delve onto the data which we were
we were studying since morning. So you can see that how the trend which flipped into a bearish trend continued, like 33 lakh bearishness on the OI change. So the call side got heavier and heavier, which though the put writer they attempted to come back at around 2 o'clock, but it was not picked up so well. So because you can see that with a difference of 33 lakh, it was being replicated again and again with some kind of momentum, so that was not picked up. तो बाद में ये सब चीज़ नहीं हुई, तो यहाँ पे इवन दो वहाँ पे अटेम्प्ट किया कि पुट राइटर दोबारा गेम में आए, वो नहीं कर पाए ये चीज़। तो इसलिए जो ओवरऑल जो सिनेरियो है डे का वो नेगेटिव ही था। तो दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो।